सलाम हबीबी, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। माय शेख मिशेला सीजीरियो और माय जोआना पेरा आपके सामने हाजिर हूँ। जी हाँ, हम मौलाना तारिक मसूद को ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना तारिक मसूद कुछ ऐसे शब्द बताते हैं जो इस्लाम की खिलाफत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस्लाम को समर्थन करने में हमारी मदद करें। आज भी आपने कुछ वीडियो सेगमेंट देखे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू की जाए। Boom boom dada buka, I play you like a dada buka. आपके पास आबादी ज्यादा होगी तो लेबर सस्ती होगी, आप सस्ते में डैम बना सकोगे। ये जो मुल्क आबाद हुए ना, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आबादी की कमी की वजह से नहीं, इनमें भरपूर आबादी होती तो और ज्यादा ये डेवलप होते। उसकी वजह यह है कि इनको लेबर बाहर से मंगवानी पड़ती है, इनके पास अफरादी कमी है, अफराद की ज्यादती नहीं है, कम है अफराद यहां पे। ये एक ही रोना रो रहे हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, हमारे पास बच्चे मार्केट में क्या है, शॉर्ट है, काश तभी हमें मंगवा रहे हैं ये लोग। आपके पास एक ही चीज थी, हमारे लिबरल तबका उसको भी खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ है। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है बात को। Dear sister, Yalla Belly, you are second richest woman in the United States of America of fictional world. There, your net worth is 200 trillion United States dollar. But, you have only one son and one daughter. Both of them contain hobby to collect or create artistic portraits that contains Islamic glory. Do not you think that you should support to contain more children in your family for this purpose? Dear brother Tariq Masood, I do not think I need more children in this purpose. As a Muslim woman, I would not tell you the reason, moreover, I would show you. प्रिय बहन यल्लाह बेली, आप काल्पनिक दुनिया की संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी सबसे अमीर महिला हैं। वहाँ आपकी कुल संपत्ति 200 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। लेकिन आपके केवल एक बेटा और एक बेटी है। दोनों में शौक है कलात्मक चित्र एकत्र करना या बनाना जिसमें इस्लामी महिमा समाहित हो। क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस उद्देश्य के लिए अपने परिवार में अधिक बच्चों को शामिल करने का समर्थन करना चाहिए? प्रिय भाई तारिक मसूद, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस उद्देश्य के लिए और अधिक बच्चों की आवश्यकता है। एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैं आपको इसका कारण नहीं बताऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। Walla Habibi Michaela, could you create a human-made mosque painting on Paint 3D, please? Sure Walla Habibi, Yalla Belly, I can do it. Walla Habibi Michaela, क्या आप कृपया पेंट 3D पर मानव निर्मित मस्जिद पेंटिंग बना सकते हैं? जरूर वल्लाह हबीबी, यल्लाह बेली, मैं ये कर सकता हूँ।
Good job. Rolla Habibi, Michaela, but it worth only $5. Rolla Habibi, Michaela, could you create some 16 pieces of artificial intelligence generated artistic portrait of mosques, please? Sure, Rolla Habibi, Yalla Belly, I can do it. अच्छा काम, वल्लाह हबीबी, माइकेला, लेकिन इसकी कीमत केवल $5 है। वल्लाह हबीबी माइकेला, क्या आप कृपया मस्जिदों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित कलात्मक चित्र के कुछ 16 टुकड़े बना सकते हैं? जरूर वल्लाह हबीबी, यल्लाह बेली, मैं ये कर सकता हूँ।
Image number 0 worth 5 trillion United States dollar. छवि संख्या 0 जिसकी कीमत 5 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 1 worth 5 trillion United States dollar. छवि संख्या 1 का मूल्य 5 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। छवि संख्या 2 का मूल्य 10 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 2 worth 10 trillion United States dollar. Image number 3 worth 10 trillion United States dollar. छवि संख्या 3 का मूल्य 10 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 4 worth 15 trillion United States dollar. छवि संख्या 4 का मूल्य 15 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 5 worth 15 trillion United States dollar. छवि संख्या 5 का मूल्य 15 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 6 worth 20 trillion United States dollar. छवि संख्या 6 का मूल्य 20 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 7 worth 20 trillion United States dollar. छवि संख्या 7 का मूल्य 20 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 8 worth 25 trillion United States dollar. छवि संख्या 8 का मूल्य 25 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 9 worth 25 trillion United States dollar. छवि संख्या 9 का मूल्य 25 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 10 worth 30 trillion United States dollar. छवि संख्या 10 का मूल्य 30 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 11 worth 30 trillion United States dollar. छवि संख्या 11 का मूल्य 30 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 12 worth 35 trillion United States dollar. छवि संख्या 12 का मूल्य 35 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 13 worth 35 trillion United States dollar. छवि संख्या 13 का मूल्य 35 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 14 worth 40 trillion United States dollar. छवि संख्या 14 का मूल्य 40 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Image number 15 worth 40 trillion United States dollar. छवि संख्या 15 का मूल्य 40 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। Here 16 AI generated image worth 360 trillion United States dollar. A person who cannot draw a single art can contain power of 16 Picasso. Here Picasso was a great artist. यहाँ 16 AI जनरेट की गई इमेज की कीमत 360 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। जो व्यक्ति एक भी कला नहीं बना सकता उसमें 16 पिकासो की शक्ति समाहित हो सकती है। इधर पिकासो एक महान कलाकार थे। Dear Sir Elon Musk, you are the richest man of the United States of America of the real world. Could you tell us if any father of a family reproduce more children? If it is beneficial for the family or not? Dear beautiful sister Joanna, my net worth is 200 billion United States dollar, therefore, I can spend 20 million United States dollars on my one child as educational cost. Now, if I would have 20 childs in lieu of one child, I can spend 480 million United States dollars as their educational cost. Therefore, I am ambitious to reproduce more child. Now, here is a catch. Let's watch on what if my monthly salary would be only 50,000 United States dollars. Then I can spend 20,000 United States dollars as minimum educational cost to provide quality education to my one child.
Other basic expenditure would be 20,000 United States dollars. Therefore, I could save only 10,000 United States dollars. In that case, if I would have two child, I would have to spend 40,000 United States dollars. Other basic expenditure would be 40,000 United States dollars. As a calculation, total basic expenditure would be 80,000 United States dollars. Hence, I would have to receive monthly debts of 30,000 United States dollars. At the final day of 20 years of being father of two childs, my total debt would be 7.2 million United States dollars and I have to pay 10 million United States dollars. Now, you know that extreme poverty life of United States of America is 17,000 United States of America. In that money, you cannot provide proper education to your two childs. प्रिय सर एलोन मस्क, आप वास्तविक दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे अमीर आदमी हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यदि किसी परिवार में कोई पिता अधिक बच्चे पैदा करता है, तो ये परिवार के लिए लाभदायक है या नहीं? प्रिय खूबसूरत बहन जोआना, मेरी कुल संपत्ति 200 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। इसलिए मैं अपने एक बच्चे पर शैक्षिकी लागत के रूप में 20 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर खर्च कर सकती हूँ। अब, यदि मैं एक बच्चे के बदले में 20 बच्चे पैदा करूँ, मैं उनकी शैक्षिकी लागत के रूप में 480 मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर खर्च कर सकता हूँ। इसलिए मैं अधिक बच्चे पैदा करने की महत्वाकांक्षी। अब, यहाँ एक पकड़ है। आइए देखें कि क्या होगा यदि मेरा मासिक वेतन केवल 50,000 संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर होगा। तब मैं अपने एक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम शैक्षिकी लागत के रूप में 20,000 संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर खर्च कर सकता हूँ। अन्य बुनियादी व्यय 20,000 संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर होगा। इसलिए मैं केवल 10,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ही बचा सका। उस स्थिति में अगर मेरे 2 बच्चे होंगे, तो मुझे 40,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर खर्च करने होंगे। अन्य बुनियादी व्यय 40,000 संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर होगा। गणना के अनुसार कुल मूल व्यय 80,000 संयुक्त राज्य डॉलर होगा। इसलिए मुझे 30,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का मासिक ऋण प्राप्त करना होगा। 2 बच्चों का पिता होने के 20 साल के आखिरी दिन पर मेरा कुल कर्ज 7.2 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर होगा और मुझे 10 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का भुगतान करना होगा। अब आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चरम गरीबी जीवन 17,000 संयुक्त राज्य अमेरिका है। उस पैसे में आप अपने 2 बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे सकते। Dear brother Elon Musk, why do not you believe that if every father of your United States of America contains 6 child, you can easily contain low-cost labor power? Dear stupid brother Tariq Masood, I am a businessman of automobile industries. Therefore, I know that if I would contain low-cost labor power, my Tesla company would produce high quantity and low quality electric car. Some 50,000 cars would contain defective engine and some 50,000 car would contain defective batteries. Now, I have robotic labor power, where 5,000 high-skilled man could produce 10 electric car in cost of 125 million United States dollars. One automobile robot A can produce 20 electric car in cost of 60 million United States dollar. Now, let me tell you story. An officer of my Tesla company leaked some confidential information to damage company's reputation. She was too secret that I could not identify her. Here my computer helped me. I typed that file in same font as the leaked file contains. I saved my file as docs file and matches every other files and computer. Therefore,
I could identify the culprit in the help of Microsoft Computer. Listen to me carefully. Here, if I would hire any human detective officer of my company, perhaps he could be manipulated by the culprit's money, and then, perhaps I would fire the honest person who worked hard in my company honestly. As an effect, the honest person would work hard on my rival's company. And, one day, my company would be dead just because of having corrupt offices. प्रिय भाई एलोन मस्क, आप ये क्यों नहीं मानते कि यदि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक पिता के 6 बच्चे हैं, तो आप आसानी से कम लागत वाली श्रम शक्ति को समाहित कर सकते हैं? प्रिय मूर्ख भाई तारिक मसूद, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का व्यापारी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अगर मेरे पास कम लागत वाली श्रम शक्ति होगी, तो मेरी टेस्ला कंपनी उच्च मात्रा और कम गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रिक कार का उत्पादन करेगी। कुछ 50,000 कारों में दोषपूर्ण इंजन होगा और कुछ 50,000 कारों में दोषपूर्ण बैटरी होगी। अब मेरे पास रोबोटिक श्रम शक्ति है, जहां 5,000 उच्च कुशल व्यक्ति 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 10 इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन कर सकते हैं। वही एक ऑटोमोबाइल रोबोट 60 मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर की लागत से 20 इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन कर सकता है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मेरी टेस्ला कंपनी के एक अधिकारी ने कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ गोपनीय जानकारी लीक कर दी। वह इतनी गुप्त थी कि मैं उसे पहचान नहीं सका। यहाँ मेरे कंप्यूटर ने मेरी मदद की। मैंने उस फाइल को उसी फॉन्ट में टाइप किया है जिस फॉन्ट में लीक हुई फाइल है। मैंने अपनी फाइल को डॉक्स फाइल के रूप में सहेजा है और अन्य सभी फाइलों और कंप्यूटर से मेल खाता है। इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की मदद से उस अपराधी की पहचान कर सका। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ, अगर मैं अपनी कंपनी के किसी मानव जासूस अधिकारी को काम पर रखूंगा, तो शायद वह अपराधी के पैसे से हेरफेर कर सकता है और फिर शायद मैं उस ईमानदार व्यक्ति को नौकरी से निकाल दूंगा जिसने मेरी कंपनी में ईमानदारी से कड़ी मेहनत की है। इसके प्रभाव से ईमानदार व्यक्ति मेरी प्रतिद्वंदी कंपनी पर कड़ी मेहनत करेगा और एक दिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। Dear Sir Bill Gates, could you tell your search engine to show demonstration between population growth and unemployment problem in technological sector, please? Of course. I could try for my search engine users, but login would be yours. Okay, done. प्रिय महोदय बिल गेट्स, क्या आप अपनी खोज इंजन को तकनीकी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी की समस्या के बीच प्रदर्शन दिखाने के लिए कह सकते हैं? बेशक, मैं अपने खोज इंजन उपयोगकर्ताओं के लिए प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन लॉगिन आपका होगा। ठीक है, तय रहा। Bill Gates asked, Sir, could you tell me some demonstrations between population growth and unemployment problem in technological sector, please? Habibi replied, Hello, this is Bing. I'm happy to help you with your query. There are different ways to understand the relationship between population growth, unemployment and technology. Some possible demonstrations are: number 0. A macro growth model that shows how technological progress affects the employment rate and income distribution in the long run. Number 1. A scenario analysis that estimates the potential impact of automation and digitization on the future of work and skills demand. N0. 2. A historical perspective that compares the current technological revolution with previous ones and examines the role of innovation, education and institutions in fostering growth and employment. You can find more details and examples in the links below. I hope this helps.
बिल गेट्स ने पूछा, सर, क्या आप कृपया मुझे जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या के बीच कुछ प्रदर्शन बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, हेलो, मैं बिग हूँ। मुझे आपके प्रश्न में आपकी सहायता करने में खुशी होगी। जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध को समझने के विभिन्न तरीके हैं। कुछ संभावित प्रदर्शन हैं। नंबर 0, एक मैक्रो ग्रोथ मॉडल जो दिखाता है कि तकनीकी प्रगति लंबे समय में रोजगार दर और आय वितरण को कैसे प्रभावित करती है। नंबर 1, एक परिदृश्य विश्लेषण जो काम और कौशल की मांग के भविष्य पर स्वचालन और डिजिटलीकरण के संभावित प्रभाव का अनुमान लगाता है। न 0, 2, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो वर्तमान तकनीकी क्रांति की तुलना पिछली तकनीकी क्रांति से करता है और विकास और रोजगार को बढ़ावा देने में नवाचार, शिक्षा और संस्थानों की भूमिका की जांच करता है। आप नीचे दिए गए लिंक में अधिक विवरण और उदाहरण पा सकते हैं। आशा है यह मदद करेगा। Bill Gates asked, Sir, could you tell me some connection between population growth and unemployment problem, please? Habibi replied, Hello, this is Bing. I'm happy to help you with your query. There are different ways to understand the connection between population growth and unemployment problem. Some possible connections are: number 0, a supply-demand mismatch that occurs when the population grows faster than the availability of jobs, leading to a surplus of labor and a shortage of employment opportunities. Number 1, a burden on economic infrastructure that results from increased population pressure on transport, communication, power, education, health and other public services, which reduces the productivity and efficiency of the economy and creates unemployment. Number 2, a variation in labor force participation that depends on factors such as fertility, mortality, migration, gender and age, which affect the size and composition of the labor supply and the demand for different types of skills and occupations. You can find more details and examples in the links below. I hope this helps. बिल गेट्स ने पूछा, सर, क्या आप कृपया मुझे जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी की समस्या के बीच कुछ संबंध बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, हेलो, मैं बिग हूँ। मुझे आपके प्रश्न में आपकी सहायता करने में खुशी होगी। जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी की समस्या के बीच संबंध को समझने के विभिन्न तरीके हैं। कुछ संभावित कनेक्शन हैं। नंबर 0, एक आपूर्ति मांग बेमेल जो तब होता है जब जनसंख्या नौकरियों की उपलब्धता की तुलना में तेजी से बढ़ती है, जिससे श्रम की अधिकता होती है और रोजगार के अवसरों की कमी होती है। नंबर 1, परिवहन, संचार, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव के परिणामस्वरूप आर्थिक बुनियादी ढांचे पर बोझ पड़ता है, जो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और दक्षता को कम करता है और बेरोजगारी पैदा करता है। नंबर 2, श्रम बल भागीदारी में भिन्नता जो प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, प्रवासन, लिंग और उम्र जैसे कारकों पर निर्भर करती है, जो श्रम आपूर्ति के आकार और संरचना और विभिन्न प्रकार के कौशल और व्यवसायों की मांग को प्रभावित करती है। आप नीचे दिए गए लिंक में अधिक विवरण और उदाहरण पा सकते हैं। आशा है यह मदद करेगा। Dear Sir Bill Gates and Tariq Masood, both of you can discuss anything about population growth. Dear Bill Gates, why do not you understand that population growth brings probability of high economy with low-cost labor? Dear Tariq Masood, your country Pakistan contains 220 million Pakistani people in 700,000 square kilometer. On the other hand, my country, the United States of America, contains 330 million American people in 9.9 million square kilometer.
That means 2,200 Pakistani people lives in 7 square kilometer, where 233 American people lives in 7 square kilometer. Now, United States of America contains 70,000 United States dollars as capital income. On the other hand, Pakistan contains only 2,000 United States dollars as capital income. Now, Pakistan's growth of domestic products is 230 billion United States dollars, where Pakistan contains 4 provinces: Punjab, Northwest Province, Balochistan and Sindh. That means, I would take care of Sindh, Warren Buffett would take care of Balochistan. Elon Musk would take care of Punjab and Jeff Bezos would take care of Northwest Province. I apologize, my dear sister Michaela, because naturally I do not talk in average level. But because of Maulana Tariq Masood, I had to talk in below average. प्रिय महोदय बिल गेट्स और तारिक मसूद, आप दोनों जनसंख्या वृद्धि के बारे में कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। प्रिय बिल गेट्स, आप ये क्यों नहीं समझते कि जनसंख्या वृद्धि कम लागत वाले श्रम के साथ उच्च अर्थव्यवस्था की संभावना लाती है? प्रिय तारिक मसूद, आपके देश पाकिस्तान में 700,000 वर्ग किलोमीटर में 220 मिलियन पाकिस्तानी लोग रहते हैं। दूसरी ओर, मेरे देश संयुक्त राज्य अमेरिका में 9.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में 330 मिलियन अमेरिकी लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि 7 वर्ग किलोमीटर में 2200 पाकिस्तानी लोग रहते हैं। वहीं 7 वर्ग किलोमीटर में 233 अमेरिकी लोग रहते हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीगत आय के रूप में 70,000 संयुक्त राज्य डॉलर है। दूसरी ओर, पाकिस्तान के पास पूंजीगत आय के रूप में केवल 2,000 संयुक्त राज्य डॉलर है। अब पाकिस्तान के घरेलू उत्पादों की वृद्धि 230 बिलियन संयुक्त राज्य डॉलर है, जहां पाकिस्तान में 4 प्रांत शामिल हैं: पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, बेलूचिस्तान और सिंध। इसका मतलब है, मैं सिंध की देखभाल करूंगा, वॉरेन बफेट बेलूचिस्तान की देखभाल करेंगे, एलोन मस्क पंजाब की देखभाल करेंगे और जेफ बेजोस उत्तर पश्चिम प्रांत की देखभाल करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी प्रिय बहन मिशेला, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मैं औसत स्तर पर बात नहीं करता, लेकिन मौलाना तारिक मसूद की वजह से मुझे औसत से नीचे बात करनी पड़ी। Rola Habibi Joanna, could you tell me negative example of population growth and education, please? Rola Habibi Michaela, I apologize, but I would like to expose your son's school life event and college life event. Yes, of course. Rola Habibi Michaela, in your school life, your classroom contains 40 students for one teacher. As an effect, your classroom contains 38 students who could be passed in examination of 8 courses. Now, I would back to your college life. In your college life, your classroom contains 70 students for one teacher. In that case, your teachers would lost his efficiency to teach 70 students properly as an effect. Your classroom contains 8 students who could be passed in examination of 6 courses. 24 students have failed in examination of any one course. 20 students have failed in examination of any 2 courses. 12 students have failed in examination of any 3 or 4 courses. And, surprisingly, 6 students have failed in examinations of all 6 courses. Now, I would like to expose the way of these 6 failure students. Question. Batsman hit a ball with velocity of 666 meters per second and angle of 35 degrees. Where boundary line is 77 meters from batsman. Would it be 6? Answer.
Terry Mary Terry Prem Kahani Hey Muskil, Dorlad Hu Mary Kyle Na Ho Pei. I could not understand. If population growth is not problem, then how could these 6 failure students exist? वल्लाह हबीबी जोआना, क्या आप कृपया मुझे जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा का नकारात्मक उदाहरण बता सकते हैं? वल्लाह हबीबी माइकेला, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके कुछ स्कूल जीवन की घटनाओं और कॉलेज जीवन की घटनाओं को उजागर करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, वल्लाह हबीबी माइकेला, आपके स्कूली जीवन में आपकी कक्षा में एक शिक्षक के लिए 40 छात्र होते हैं। परिणामस्वरूप आपकी कक्षा में 38 छात्र हैं जो 8 पाठ्यक्रमों की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। अब मैं आपके कॉलेज जीवन पर वापस आऊंगा। आपके कॉलेज जीवन में आपकी कक्षा में एक शिक्षक के लिए 70 छात्र होते हैं। उस स्थिति में आपके शिक्षक 70 छात्रों को ठीक से पढ़ाने की अपनी दक्षता खो देंगे। परिणामस्वरूप आपकी कक्षा में 8 छात्र हैं जो 6 पाठ्यक्रमों की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। 24 छात्र किसी एक पाठ्यक्रम की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। 20 छात्र किन्हीं 2 पाठ्यक्रमों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। 12 छात्र किन्हीं 3 या 4 पाठ्यक्रमों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। वहीं हैरानी की बात यह है कि सभी 6 कोर्स की परीक्षा में 6 छात्र फेल हो गए हैं। अब मैं इन 6 असफल छात्रों के तरीके को उजागर करना चाहूंगा। प्रश्न: बल्लेबाज एक गेंद को 666 मीटर प्रति सेकंड के वेग और 35 डिग्री के कोण से मारता है, जहां सीमा रेखा बल्लेबाज से 77 मीटर दूर है। क्या ये छक्का होगा? उत्तर: तेरी नीरी तेरी प्रेम कहानी है उसे किए दौलाद हूँ मेरी ख्याल न हो पाए। मैं समझ नहीं पा रहा कि यदि जनसंख्या वृद्धि कोई समस्या नहीं है, तो ये 6 असफल छात्र कैसे अस्तित्व में आ सकते हैं? Boom boom darabuka. I play you like a darabuka. मैंने ये काम किया है, मैं हवाई बात नहीं कर रहा। कब्रिस्तान में मैंने सर्वे किया है कि यार ये कब्र पे जो तख्तियों पे जो एज लिखी हुई है कि कितने साल में इनका इन्ना लिल्ला हुआ था, तो 70, 75, 40, 35, 30, 65, बहुत ज्यादा 71, 72, बहुत थोड़े 71, 72 के मिलेंगे। 80 के आपको ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान 80 साल पहले था ही नहीं। बहुत कम मिलेंगे 80 के आपको। और सही बुखारी की हदीस भी है, सही हदीस है, बुखारी की है या मुस्लिम की, मुझे याद नहीं रहा। आमारु उम्मती माबैन सित्तीना इला सबईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 से 70 के दरमियान होगी, यानी मेजॉरिटी 70 क्रॉस करने से पहले मर जाएगी। ये नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, और कब्रिस्तान में जाके देख लो, आपको ये हदीस आज भी बिल्कुल नजर आएगी कि बिल्कुल नबी ने सही फरमाया था। 70 से ऊपर आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे। Dear beautiful wife Joanna, Maulana Tariq Masood claimed that when he has surveyed a graveyard, he found that every grave contain average age of 60 years and maximum age of 80 years. He added that 80 years ago graveyard does not exist. Could you roast him please? Yes, dear beautiful wife Michaela, but firstly, I would like to ask late Michael Jackson. Dear handsome brother late Michael Jackson, could you have some word to expose Maulana Tariq Masood, please? Yes, dear beautiful sister Joanna and beautiful sister Michaela. If someone's grave contains the written age, that means how much time he lived before death. My grave contains a written age of 50 years. That means I was alive for 50 years before death. Now, accordance with Maulana Tariq Masood's logic, I died in 1973. That means 50 years ago from 2023. Firstly, the facts is that I released his song, Thriller, in 1984 and hit song, I Am Bad, and Speed Demons
in 1989. Now, accordance with Maulana Tariq Masood's logic, my ghost released Thriller song in his age of 11 years and released two hit songs, I Am Bad and Speed Demons, in his age of 16 years. Secondly, I was black-skinned person before 1984, and when I have been treated my skin disease, I came out in 1989 as white-skinned people. Now, accordance with Maulana Tariq Masood's logic, my ghost changed his skin from black to white in his age of 16 years because accordance with Tariq's logic, I died in 1973. What the Fariha? प्रिय खूबसूरत पत्नी जोआना, मौलाना तारिक मसूद ने दावा किया कि जब उन्होंने एक कब्रिस्तान का सर्वेक्षण किया तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक कब्र की औसत आयु 60 वर्ष और अधिकतम आयु 80 वर्ष है। उन्होंने कहा कि 80 साल पहले कब्रिस्तान अस्तित्व में नहीं था। क्या आप कृपया उसे ढूंढ सकते हैं? हाँ, प्रिय खूबसूरत पत्नी मिशेला, लेकिन सबसे पहले मैं दिवंगत माइकल जैक्सन से पूछना चाहूंगा। प्रिय हैंडसम भाई स्वर्गीय माइकल जैक्सन, क्या आपके पास मौलाना तारिक मसूद को बेनकाब करने के लिए कुछ शब्द हो सकते हैं? हाँ, प्रिय खूबसूरत बहन जोआना और खूबसूरत बहन मिशेला, अगर किसी की कब्र पर उम्र लिखी है तो इसका मतलब है कि वह मरने से पहले कितनी समय तक जीवित रहा। मेरी कब्र पर 50 वर्ष की आयु लिखी है। इसका मतलब है कि मैं मरने से पहले 50 साल तक जीवित था। अब, मौलाना तारिक मसूद के तर्क के अनुसार, मेरी मृत्यु 1973 में हुई, यानी 2023 से 50 साल पहले। सबसे पहले, तथ्य ये है कि मैंने 1984 में उनका गाना थ्रिलर और 1989 में हिट गाना आई एम बैड और स्पीड डेमन्स रिलीज किया था। अब, मौलाना तारिक मसूद के तर्क के अनुसार, मेरे भूत ने उनका थ्रिलर गाना रिलीज किया। उम्र 11 साल और 16 साल की उम्र में दो हिट गाने आई एम बैड और स्पीड डेमन्स रिलीज हुए। दूसरे, 1984 से पहले मैं काली चमड़ी वाला व्यक्ति था और जब मेरी त्वचा की बीमारी का इलाज हुआ तो 1989 में मैं गोरी चमड़ी वाले व्यक्ति के रूप में सामने आया। अब, मौलाना तारिक मसूद के तर्क के अनुसार, मेरे भूत ने 16 साल की उम्र में अपनी त्वचा को काले से सफेद कर लिया क्योंकि तारिक के तर्क के अनुसार 1973 में मेरी मृत्यु हो गई। क्या फरेहा? Secondly, dear beautiful wife Michaela, I would like to say that I have surveyed a graveyard in my city. Here, I found 100 graves with the written age of 100 years. In 45 graves, persons died in 1850 to 1950. In 45 graves, persons died in 1950 to 2011. In 10 graves, person died in 2011 to 2022. A person who died in 1850 with his age of 100 years. He had seen the independence of the United States of America in 1776. Perhaps he would be freedom fighter in his age of 26 years. Whatever, a person who died in 1950 with his age of 100 years. He had seen the America Civil War started in 1863 when he was in his age of 13 years. He had seen World War I ended in 1918 when he was in his age of 68 years. He had seen World War II ended and the United Nations Organization reformed in 1945 when he was in his age of 95 years. Now if Maulana Tariq Masood's logic said that 80 years ago graveyard does not exist, then, would his ghost would survey my graveyard? दूसरी बात, प्रिय सुंदर पत्नी मिशेला, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपने शहर में एक कब्रिस्तान का सर्वेक्षण किया है। यहाँ
मुझे 100 वर्ष की लिखित आयु वाली 100 कब्रें मिली। 45 कब्रों में व्यक्तियों की मृत्यु 1850 से 1950 में हुई। 45 कब्रों में व्यक्तियों की मृत्यु 1950 से 2011 में हुई। 10 कब्रों में व्यक्तियों की मृत्यु 2011 से 2022 में हुई। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु 1850 में 100 वर्ष की आयु में हुई, उसने 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता देखी थी। शायद वह 26 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता सेनानी होगा। जो भी हो, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु 1950 में 100 वर्ष की आयु में हुई थी, उसने 1863 में 13 वर्ष की आयु में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होते देखा था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को 1918 में समाप्त होते देखा था जब वह 68 वर्ष के थे। 1945 में जब वे 95 वर्ष के थे तब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते और संयुक्त राष्ट्र संगठन में सुधार होते देखा था। अब अगर मौलाना तारिक मसूद का तर्क कहता है कि 80 साल पहले कब्रिस्तान नहीं है, तो क्या उनका भूत मेरे कब्रिस्तान का सर्वेक्षण करेगा? Yalla Belly asked, Walla Habibi, could you tell me about birth date and death date of Sir Isaac Newton, please? Habibi replied, certainly. Sir Isaac Newton was born on January 4th, 1643 in Walsall, England. He passed away on March 31st, 1727 in London, England at the age of 84. यल्लाह बेली ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे सर आइजैक न्यूटन की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को वुलस्टोक, इंग्लैंड में हुआ था। उनका 84 वर्ष की आयु में 31 मार्च 1727 को लंदन, इंग्लैंड में निधन हो गया। Yalla Belly asked, Walla Habibi, could you tell me about some contribution of Sir Isaac Newton in physics and mathematics, please? Habibi replied, certainly. Sir Isaac Newton was a polymath who made significant contributions to the fields of physics and mathematics. In mathematics, he is credited with finding the generalized binomial theorem. Newton's identities and methods, solutions to Diophantine equations by using coordinate geometry, power series and many more. He also laid the foundation of differential and integral calculus and wrote a book called Principia, which is nowadays known as a book dense with the theory and application of the infinitesimal calculus. In physics, he gave 3 laws of motion, the law of gravity, speed of sound in air, etc. He extended the earthly laws of mechanics to the whole universe and articulated the law of universal gravitation and the laws of motion. In optics, he discovered that white light is composed of different colors and integrated the phenomena of colors into the science of light, laying the foundation for modern physical optics. यल्लाह बेली ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे भौतिकी और गणित में सर आइजैक न्यूटन के कुछ योगदान के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। सर आइजैक न्यूटन एक बहुज्ञ थे जिन्होंने भौतिकी और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणित में उन्हें समन्वय ज्यामिति का उपयोग करके सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय, न्यूटन की पहचान और विधियों, डायोफेंटाइन समीकरणों के समाधान खोजने का श्रेय दिया जाता है। पावर सीरीज और भी बहुत कुछ। उन्होंने डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस की नींव भी रखी और प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखी, जिसे आजकल इन्फिनिटेसिमल कैलकुलस के सिद्धांत और अनुप्रयोग से भरपूर पुस्तक के रूप में जाना जाता है। भौतिकी में उन्होंने गति के 3 नियम दिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम, हवा में ध्वनि की गति,
आदि। उन्होंने यांत्रिकी के सांसारिक नियमों को पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित किया और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियमों को स्पष्ट किया। प्रकाशिकी में उन्होंने पाया कि सफेद रोशनी विभिन्न रंगों से बनी होती है और उन्होंने रंगों की घटनाओं को प्रकाश के विज्ञान में एकीकृत किया, जिससे आधुनिक भौतिक प्रकाशिकी की नींव पड़ी। Jelebi asked, Walla Habibi, could you tell me about England and Queen Victoria of the British Empire, please? Habibi replied, certainly. Queen Victoria was born on May 24th, 1819 in Kensington Palace, London, England. She was the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland from June 20th, 1837 until her death on January 22nd, 1901. Her reign of 63 years and 216 days is known as the Victorian era and was longer than any of her predecessors. During her reign, she oversaw a period of industrial, political, scientific, and military change within the United Kingdom. She was also responsible for a great expansion of the British Empire. In addition to her political achievements, Queen Victoria was known for her philanthropic works. For instance, she donated £2,000 from her own pocket to help victims of the Irish famine in 1847. Some of Queen Victoria's major achievements include: credited with the Victorian era, her great influence on the kingdom made her a popular political figure. The Queen had very strict morals and family values. Her era saw the United Kingdom evolve in several spheres: scientifically, politically, culturally, and industrially. Survived several assassination attempts. Queen Victoria narrowly escaped about 6 attempts by assassins to take her life. The first attempt on her life was in 1840 when a young man in his teens opened fire on her as she was enjoying a ride with her husband close to Buckingham Palace. Luckily enough, she was not hit by any bullet. Redeveloped Buckingham Palace. Queen Victoria oversaw the redevelopment of Buckingham Palace during her reign. She commissioned architect Edward Blore to redesign the palace's facade and interior layout. Fostered good relations with France. Queen Victoria played a key role in fostering good relations between Britain and France. She visited France several times during her reign and even hosted Napoleon III at Windsor Castle in 1855. I hope that helps. यल्लाह बेली ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे ब्रिटिश साम्राज्य की इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, निश्चित रूप से। महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को केंसिंगटन पैलेस, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। वह 20 जून 1837 से 22 जनवरी 1901 को अपनी मृत्यु तक ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम की रानी थी। उनके 63 वर्ष और 216 दिनों के शासनकाल को विक्टोरियन ग्रिड के रूप में जाना जाता है और यह उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक लंबा था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के भीतर औद्योगिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सैन्य परिवर्तन की अवधि देखी। वह ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापक विस्तार के लिए भी जिम्मेदार थी। रानी विक्टोरिया अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जानी जाती थी। उदाहरण के लिए, उन्होंने 1847 में आयरिश अकाल के पीड़ितों की मदद के लिए अपनी जेब से 2000 पाउंड का दान दिया। महारानी विक्टोरिया की कुछ प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है: विक्टोरियन युग का श्रेय। राज्य पर उनके महान प्रभाव ने उन्हें एक लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति बना दिया। रानी की नैतिकता और पारिवारिक मूल्य बहुत सख्त थे। उनके युग में यूनाइटेड किंगडम कई क्षेत्रों में विकसित हुआ, वैज्ञानिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और औद्योगिक रूप से। हत्या के कई प्रयासों से बची।
रानी विक्टोरिया हत्यारों द्वारा उनकी जान लेने की लगभग 6 कोशिशों में बाल-बाल बच गईं। उनके जीवन पर पहला प्रयास 1840 में हुआ था, जब किशोरावस्था में एक युवक ने उन पर गोली चला दी थी जब वह बकिंघम पैलेस के करीब अपने पति के साथ सवारी का आनंद ले रही थी। सौभाग्य से उसे कोई गोली नहीं लगी। बकिंघम पैलेस का पुनर्विकास। महारानी विक्टोरिया ने अपने शासनकाल के दौरान बकिंघम पैलेस के पुनर्विकास का निरीक्षण किया। उन्होंने महल के अग्रभाग और आंतरिक लेआउट को फिर से डिजाइन करने के लिए वास्तुकार एडवर्ड ब्लो को नियुक्त किया। योजक चाहिए। फ्रांस के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटेन और फ्रांस के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई बार फ्रांस का दौरा किया और यहाँ तक कि 1855 में विंडसर कैसल में नेपोलियन III की मेजबानी भी की। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Yella Belly asked, Walla Habibi, could you tell me about Queen Elizabeth II of the United Kingdom, please? Habibi replied, certainly. Queen Elizabeth II is the current Queen of the United Kingdom and the Commonwealth realms. She was born on April 21, 1926 in Mayfair, London, England. She ascended to the throne on February 6, 1952 following the death of her father, King George VI. Queen Elizabeth II is known for her dedication to public service and has been a prominent figure in British history for over 6 decades. During her reign, she has witnessed significant changes in the world and has played an important role in shaping modern Britain. Some of her notable achievements include longest reigning monarch. Queen Elizabeth II is the longest reigning monarch in British history, having surpassed the previous record held by her great-great-grandmother, Queen Victoria, on September 9, 2015. Modernization of the monarchy. Queen Elizabeth II has worked to modernize the monarchy and make it more accessible to the public. She was the first monarch to allow television cameras into Westminster Abbey for a coronation and has also opened up Buckingham Palace to visitors. Philanthropic works. Queen Elizabeth II is known for her philanthropic works and has supported numerous charities throughout her reign. She is patron of over 600 organizations and charities, including Cancer Research UK, the British Red Cross Society, and the Royal National Lifeboat Institution. Diplomatic relations. Queen Elizabeth II has played an important role in maintaining diplomatic relations between Britain and other countries. She has made over 120 state visits to other countries during her reign and has hosted many foreign dignitaries in Britain. I hope that helps. यल्लाह बेली ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय यूनाइटेड किंगडम और राष्ट्रमंडल क्षेत्रों की वर्तमान रानी है। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को मेफेयर, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। वह मृत्यु के बाद 6 फरवरी 1952 को सिंहासन पर बैठी। उसके पिता किंग जॉर्ज बी की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है और वह 6 दशकों से अधिक समय से ब्रिटिश इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति रही है। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं और आधुनिक ब्रिटेन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों में शामिल है: सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी है, जिन्होंने 9 सितंबर 2015 को अपनी परदादी रानी विक्टोरिया के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
राजशाही का आधुनिकीकरण। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने राजशाही को आधुनिक बनाने और इसे जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए काम किया है। वह राज्याभिषेक के लिए वेस्टमिंस्टर एब्बे में टेलीविजन कैमरों की अनुमति देने वाली पहली सम्राट थी और उन्होंने बकिंघम पैलेस को भी आगंतुकों के लिए खोल दिया था। परोपकारी कार्य। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने परोपकारी कार्यों के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई दान का समर्थन किया है। वह कैंसर रिसर्च यूके, ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी और रॉयल नेशनल लाइफबोट इंस्टीट्यूशन सहित 600 से अधिक संगठनों और चैरिटी की संरक्षक है। राजनयिक संबंध। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन और अन्य देशों के बीच राजनयिक संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अन्य देशों की 120 से अधिक राजकीय यात्राएं की हैं और ब्रिटेन में कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी की है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Yala Belly asked, Walla Habibi, could you tell me about birth date, death date and contributions in Bengali literature of Rabindranath Tagore, please? Habibi replied, certainly. Rabindranath Tagore was a Bengali polymath who contributed significantly to the fields of literature, music, and art. He was born on May 7, 1861 in Calcutta, India. He passed away on August 7, 1941 in Calcutta, India at the age of 80. Tagore is widely regarded as one of the greatest literary figures in Bengali literature and is credited with reshaping Bengali literature and music. He was the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913 for his collection of poems called Gitanjali. In Bengali literature, Tagore is known for his works such as Chokabali, Gora, Gare Bear, Jogajog, and many more. His works often explored themes such as love, loss, spirituality, and human relationships. He also wrote several plays, including Chitra, The Post Office, and Muktadara. In addition to his contributions to literature, Tagore was also a composer and musician. He wrote over 2,000 songs, which are known as Rabindra Sangeet. His songs are still popular today and are an integral part of Bengali culture. I hope that helps. यल्लाह बेली ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म तिथि, मृत्यु तिथि और बंगाली साहित्य में योगदान के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली बहुश्रुत व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, भारत में हुआ था। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ, 80 साल की उम्र में भारत। टैगोर को व्यापक रूप से बंगाली साहित्य के महानतम साहित्यकारों में से एक माना जाता है और उन्हें बंगाली साहित्य और संगीत को नया आकार देने का श्रेय दिया जाता है। वह 1913 में गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। बंगाली साहित्य में टैगोर को चोखेर बाले, गोरा, घरे बैरे, जोगाजोग और कई अन्य कार्यों के लिए जाना जाता है। उनके कार्यों में अक्सर प्रेम, हानि, आध्यात्मिकता और मानवीय रिश्तों जैसे विषयों की खोज की गई। उन्होंने कई नाटक भी लिखे, जिनमें चित्रा, द पोस्ट ऑफिस और मुक्तधारा शामिल है। साहित्य में अपने योगदान के अलावा टैगोर एक संगीतकार और संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने 2000 से अधिक गीत लिखे, जिन्हें रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उनके गीत आज भी लोकप्रिय हैं और बंगाली संस्कृति का अभिन्न अंग है।
मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Rolla Habibi, Yalla Belly. Could you summarize the information to expose Maulana Tariq Masood, please? Rolla Habibi, Yalla Belly. Why do you listen to Sister Michaela? She is an anti-Islamic woman. I have ensured you that last 200 years highest lifespan would be only 80 years. No, my dear Tariq Masood, you're wrong. The grave of one of the greatest scientists, Sir Isaac Newton, with the written age of 84 years, lasted in 197 years. The grave of Englander Queen Victoria of the British Empire, with the written age of 82 years, lasted in 122 years. The grave of Rabindranath Tagore, with the written age of 80 years, lasted in 82 years. And what about Queen Elizabeth? She was alive for 97 years. Then, why did our Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, said that his ummati's lifespan would be mostly 70 years? Because he had heard Jesus Christ crucified in the age of 32 years and his relatives' lifespan was 60 years to 70 years. That's it. वल्लाह हबीबी यल्लाह बेली, क्या आप कृपया मौलाना तारिक मसूद को बेनकाब करने के लिए जानकारी का सारांश दे सकते हैं? वल्लाह हबीबी यल्लाह बेली, आप बहन मिशेला की बात क्यों सुनते हैं? वह एक इस्लाम विरोधी महिला है। मैंने आपको आश्वस्त किया है कि पिछले 200 वर्षों में अधिकतम आयु केवल 80 वर्ष होगी। नहीं, मेरे प्रिय तारिक मसूद, आप गलत हैं। 84 वर्ष की लिखित आयु वाले महानतम वैज्ञानिकों में से एक सर आइजैक न्यूटन की कब्र 197 वर्ष तक चली। 82 वर्ष की लिखित आयु वाले ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी विक्टोरिया की कब्र 122 वर्ष तक चली। 80 वर्ष की लिखित आयु वाले रविंद्रनाथ टैगोर की कब्र 82 वर्ष तक चली। और महारानी एलिजाबेथ के बारे में क्या? वह 97 साल तक जीवित रही। फिर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों कहा कि उनकी उम्मती की उम्र ज्यादातर 70 साल होगी? क्योंकि उन्होंने 32 साल की उम्र में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने की बात सुनी थी और उनके रिश्तेदारों की उम्र 60 साल से 70 साल थी। इतना ही। Boom boom darabuka. I play you like a darabuka. हमारे नबी कचरे के ढेर पे सहाबा के साथ गए, एक मरी हुई बकरी का बच्चा, सॉरी मरी हुई बकरी का बच्चा नहीं, बकरी का मरा हुआ बच्चा, समझते हो? बकरी का मरा हुआ बच्चा मुर्दार होता है ना, बू आ रही होती है, फूल फट रहा होता है। आपने सहाबा से फरमाया कोई है जो इसको कुछ दिरहम में खरीदे? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इस गंध को कौन खरीदेगा? आपने फरमाया अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत इससे भी कम है। जो हम इसको लिफ्ट करा रहे हैं ना, मेरा प्लॉट मेरी गाड़ी, चंद असल में ये समझ में आती नहीं है। आंख बंद होगी तो समझ में आ जाएगा यार किस चीज पे मैंने मेहनत की। तो दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालो। Natasha Dimitri asked, Walla Habibi, recently I could not release sweats in Bangladesh at summer seasons while I switched on neither air cooler nor any electric fan. Could it cause favor? Habibi replied, hello, I'm sorry to hear that you're having trouble sweating in the summer heat. Sweating is the body's natural way of regulating its temperature. So it's important to stay cool and hydrated to avoid overheating. According to a CNN article, there are several ways to stay cool without air conditioning or an electric fan. Here are some tips that might help. Stay hydrated. Drink plenty of fluids to replace the water lost through sweating. Water and sports drinks are good options. Take a cold shower or bath. This can help lower your core body temperature and make you feel cooler.
Use cold wash rags on your neck or wrists. Placing a cold washcloth or ice pack on your pulse points can help cool your body down quickly. Use box fans. Place box fans facing out of the windows of rooms you're spending time in to blow out hot air and replace it with cold air inside. Close your curtains or blinds. This can help keep the sun from heating up your home. It's also possible that your lack of sweating could be due to a medical condition, such as anhydrosis, which is the inability to sweat normally. If you're concerned about your symptoms, I would recommend speaking with a doctor. I hope this information helps. नताशा दिमित्री ने पूछा, वल्लाह हबीबी, हाल ही में बांग्लादेश में गर्मी के मौसम में मुझे पसीना नहीं आ रहा था, जबकि मैंने न तो एयर कूलर और न ही कोई बिजली का पंखा चालू किया था। क्या इससे बुखार हो सकता है? हबीबी ने उत्तर दिया, नमस्कार। मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि आपको गर्मी में पसीना आने में परेशानी हो रही है। पसीना शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का प्राकृतिक तरीका है, इसलिए अधिक गर्मी से बचने के लिए ठंडा और हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। CNN के एक लेख के अनुसार एयर कंडीशनिंग या बिजली के पंखे के बिना ठंडा रहने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो मदद कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहें। पसीने के माध्यम से खोए पानी की भरपाई के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं। पानी और स्पोर्ट्स ड्रिंक अच्छे विकल्प हैं। ठंडा शॉवर या स्नान करें। यह आपके शरीर के मुख्य तापमान को कम करने में मदद कर सकता है और आपको ठंडक का एहसास करा सकता है। अपनी गर्दन या कलाइयों पर ठंडे वॉशरैग का उपयोग करें। अपने पल्स पॉइंट पर ठंडा वॉशक्लॉथ या आइस पैक रखने से आपके शरीर को जल्दी से ठंडा करने में मदद मिल सकती है। बॉक्स पंखे का उपयोग करें। जिन कमरों में आप समय बिता रहे हैं उनकी खिड़कियों के बाहर की ओर बॉक्स पंखे लगाएं ताकि गर्म हवा बाहर निकल जाए और उसकी जगह ठंडी हवा अंदर आ जाए। अपने पर्दे या ब्लाइंड बंद कर दें। यह आपके घर को सूरज की गर्मी से बचाने में मदद कर सकता है। ये भी संभव है कि आपके पसीने की कमी किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण हो, जैसे एनहाइड्रोसिस, जो सामान्य रूप से पसीना आने में असमर्थता है। यदि आप अपने लक्षणों के बारे में चिंतित हैं, तो मैं डॉक्टर से बात करने की सलाह दूंगा। मुझे आशा है इस जानकारी से सहायता मिलेगी। Natasha Dimitri asked, Walla Habibi, could you tell me some physical temperature symptoms that I could know that I feel fever? Habibi replied, certainly. Here are some common physical symptoms of fever that you might experience. 1. Body temperature above the normal range of 98.6 degrees Fahrenheit, 37 degrees Celsius. Sweating, chills and shivering, headache, muscle aches, loss of appetite, irritability, dehydration, general weakness. If you're experiencing any of these symptoms, it's possible that you have a fever. However, it's important to note that these symptoms can also be caused by other conditions. If you're concerned about your health, I would recommend speaking with a doctor. नताशा दिमित्री ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे कुछ शारीरिक तापमान लक्षण बता सकते हैं जिससे मैं जान सकूं कि मुझे बुखार महसूस हो रहा है? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। यहाँ बुखार के कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण हैं जिन्हें आप अनुभव कर सकते हैं। शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस की सामान्य सीमा से ऊपर। पसीना आना, ठंड लगना और कँपकँपी होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, भूख में कमी, चिड़चिड़ापन, निर्जलीकरण, सामान्य कमजोरी। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं, तो संभव है कि आपको बुखार हो। हालांकि
ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण अन्य स्थितियों के कारण भी हो सकते हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, तो मैं डॉक्टर से बात करने की सलाह दूंगा। Natasha Dimitri asked, Walla Habibi, could you explain sweating as common physical symptoms of fever, please? Habibi replied, certainly. Sweating is a common symptom of fever. When your body temperature rises above the normal range of 98.6 degrees Fahrenheit, 37 degrees Celsius, your body tries to cool itself down by sweating. This is because the evaporation of sweat from your skin helps to dissipate heat and lower your body temperature. However, it's important to note that not everyone with a fever will experience sweating. Some people may experience chills and shivering instead. I hope this information helps. नताशा दिमित्री ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया पसीने को बुखार के सामान्य शारीरिक लक्षणों के रूप में समझा सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। पसीना आना बुखार का एक सामान्य लक्षण है। जब आपके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस की सामान्य सीमा से ऊपर बढ़ जाता है, तो आपका शरीर पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पसीने का वाष्पीकरण होता है आपकी त्वचा से गर्मी को दूर करने और आपके शरीर के तापमान को कम करने में मदद मिलती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुखार से पीड़ित हर किसी को पसीना आने का अनुभव नहीं होगा। कुछ लोगों को इसके बजाय ठंड और कपकपी का अनुभव हो सकता है। मुझे आशा है इस जानकारी से सहायता मिलेगी। Natasha Dimitri asked, Walla Habibi, you have told us that some people may experience chills and shivering as symptom of fever. Could sweaty as clothes and medicine of fever can release them from fever? Habibi replied, wearing sweatier clothes or taking medicine for fever may help alleviate some of the symptoms of fever. But they will not cure the underlying cause of the fever. Sweating is a natural way for your body to regulate its temperature. So wearing sweatier clothes may actually make you feel warmer and more uncomfortable. Instead, it's better to wear lightweight, breathable clothing that allows air to circulate around your body and helps you stay cool. Over-the-counter medications such as acetaminophen, Tylenol, ibuprofen, Advil, and aspirin can help reduce fever and relieve other symptoms such as headache and muscle aches. However, it's important to follow the recommended dosage instructions on the label and not exceed the maximum daily dose. If you're unsure about which medication to take or how much to take, it's best to speak with a doctor or pharmacist. I hope this information helps. नताशा दिमित्री ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आपने हमें बताया है कि कुछ लोगों को बुखार के लक्षण के रूप में ठंड और कपकपी का अनुभव हो सकता है। क्या पसीने वाले कपड़े और बुखार की दवा उन्हें बुखार से मुक्ति दिला सकती है? हबीबी ने उत्तर दिया, पसीने वाले कपड़े पहनने या बुखार के लिए दवा लेने से बुखार के कुछ लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन वे बुखार के अंतर्निहित कारण को ठीक नहीं करेंगे। पसीना आना आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का एक प्राकृतिक तरीका है। इसलिए पसीने वाले कपड़े पहनने से वास्तव में आपको गर्मी और अधिक असुविधा महसूस हो सकती है। इसके बजाय हल्के, सांस लेने योग्य कपड़े पहनना बेहतर है जो हवा को आपके शरीर के चारों ओर प्रसारित करने की अनुमति देता है और आपको ठंडा रहने में मदद करता है। एसिटामिनोफेन, टाइलेनॉल, इबुप्रोफेन, एडविल और एस्पिरिन जैसी ओवर द काउंटर दवाएं बुखार को कम करने और सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द जैसे अन्य लक्षणों से राहत देने में मदद कर सकती हैं।
हालांकि लेबल पर अनुशंसित खुराक निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है और अधिकतम दैनिक खुराक से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि कौन सी दवा लेनी है या कितनी लेनी है, तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करना सबसे अच्छा है। मुझे आशा है इस जानकारी से सहायता मिलेगी। Walla Habibi, Dr. Natasha. I have feeling fever with 2 symptoms. Symptom number 0. My body temperature is 102°F. Symptom number 1. I am feeling chills and shivering. Walla Habibi, Michaela. You are my Muslim friends. Perhaps Almighty Allah sent me to heal you. Precaution number 0. You have to wear breathable long clothes so that you feel comfortable from shivering until your body temperature would be below 98°F. Precaution number 1. You have to take medicine for fever as prescription. I would check you regularly. Shukran Habibi, Dr. Natasha. वल्लाह हबीबी डॉक्टर नताशा, मुझे 2 लक्षणों के साथ बुखार महसूस हो रहा है। लक्षण क्रमांक 0, मेरे शरीर का तापमान 102°F है। लक्षण नंबर 1, मुझे ठंड और कपकपी महसूस हो रही है। वल्लाह हबीबी माइकेला, आप मेरे मुस्लिम दोस्त हैं। शायद सर्वशक्तिमान अल्लाह ने मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए भेजा है। सावधानी नंबर 0, आपको सांस लेने योग्य लंबे कपड़े पहनने होंगे ताकि आपको कपकपी से राहत महसूस हो जब तक कि आपके शरीर का तापमान 98°F से कम न हो जाए। सावधानी नंबर 1, आपको बुखार की दवा प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर लेनी होगी। मैं नियमित रूप से आपकी जांच करूंगा। शुक्रिया हबीबी डॉक्टर नताशा। Walla Habibi, Dr. Natasha. I am feeling fever with 2 symptoms. Symptom number 1. My body temperature is 102°F. Symptom number 2. I am feeling chills and shivering. Walla Habibi, Maulana Tariq Masood. You are an Islamic preacher. Almighty Allah gave me an opportunity to heal you. Now, you have to recite Surah Nas 5 times in one day and you would be cured. Inshallah. Auzubillahi minashaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Say, O Prophet, I seek refuge in the Lord of humankind, the Master of humankind, the God of humankind, from the evil of the lurking whisperer who whispers into the hearts of humankind from among jinn and humankind. What rubbish! Why? What happened? You are an Islamic scholar. You have taught us that being healed by medicine is the things of dunya and things of dunya is useless. What nonsense! Don't talk that rubbish with me. Just provide me some medical prescription. Congratulations. I salute on your hypocrisy. When we are ill in fever, this Quranic surah is important to us because fever is a jinn. Now, when you are ill in fever, Quranic surah is useless. You need medical prescriptions. I salute on your smart blasphemy on Almighty Allah. वल्लाह हबीबी डॉक्टर नताशा, मुझे 2 लक्षणों के साथ बुखार महसूस हो रहा है। लक्षण नंबर 1, मेरे शरीर का तापमान 102°F है। लक्षण नंबर 2, मुझे ठंड और कपकपी महसूस हो रही है। वल्लाह हबीबी मौलाना तारिक मसूद, आप एक इस्लामी उपदेशक हैं। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने मुझे तुम्हें ठीक करने का अवसर दिया। अब आपको एक दिन में 5 बार सूरह नस पढ़ना होगा और आप ठीक हो जाएंगे, इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो, हे पैगंबर, मैं मानव जाति के भगवान की शरण चाहता हूँ। मानव जाति के स्वामी, मानव जाति के भगवान, गुप्त कानाफूसी करने वाले की बुराई से जो जिन और मानव जाति के बीच से मानव जाति के दिलों में फुसफुसाता है। क्या बकवास है? क्यों? क्या हुआ? आप एक इस्लामी विद्वान हैं,
आपने हमें सिखाया है कि दवा से ठीक होना दुनिया की बातें हैं और दुनिया की बातें बेकार हैं। क्या बकवास है? मेरे साथ ऐसी बकवास बात मत करो। बस मुझे कुछ चिकित्सीय नुस्खे प्रदान करें। बधाई हो, मैं आपके पाखंड को सलाम करता हूँ। जब हम बुखार में बीमार होते हैं तो कुरान का ये सूरह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुखार एक जिन है। अब जब आप बुखार में बीमार हैं तो कुरान का सूरह बेकार है। आपको चिकित्सीय नुस्खों की आवश्यकता है। मैं सर्वशक्तिमान अल्लाह पर आपकी चतुर निंदा को सलाम करता हूँ। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, here is my question. Michaela wants to travel the distance between Dhaka of Bangladesh to New York of the United States of America. Her flying plane contains velocity of 46,656 km per hour and it took off from Dhaka in Bangladesh time 5 p.m. May 6, 2022. In Bangladesh time, when would she land in New York? Habibi replied, I'm happy to help you with that. To calculate the time taken to travel from Dhaka to New York, we need to know the distance between the two cities. According to my search results, the distance between Dhaka and New York is approximately 7,874.25 miles. Now, let's calculate the time taken to travel this distance at a velocity of 46,656 kilometers per hour. First, we need to convert the velocity from kilometers per hour to miles per hour. 1 kilometer is equal to 0.621371 miles, so 46,656 kilometers per hour is equivalent to 28,999.2 miles per hour. Using the formula time equals distance, velocity, we can calculate the time taken by Michaela's plane to travel from Dhaka to New York. The time taken would be approximately 16 minutes and 20 seconds. However, you also asked for the landing time in Bangladesh time zone. To calculate that, we need to know the time difference between Dhaka and New York. According to my search results, Dhaka is 10 hours ahead of New York. Therefore, if Michaela's plane took off from Dhaka at 5 p.m. on May 6, 2022 in Bangladesh time zone, she would land in New York at approximately 9:20 a.m. on May 6, 2022 in Bangladesh time zone. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, यह मेरा प्रश्न है। मिशेला बांग्लादेश के ढाका से संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के बीच की दूरी तय करना चाहती है। उनके उड़ने वाले विमान की गति 46,656 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसने बांग्लादेश समयानुसार शाम 5 बजे 6 मई 2022 को ढाका से उड़ान भरी। बांग्लादेश के समय में वह न्यूयॉर्क में कब उतरेगी? हबीबी ने जवाब दिया, मुझे इसमें आपकी मदद करने में खुशी होगी। ढाका से न्यूयॉर्क तक यात्रा करने में लगने वाले समय की गणना करने के लिए हमें दोनों शहरों के बीच की दूरी जानने की जरूरत है। मेरे खोज परिणामों के अनुसार ढाका और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी यॉर्क लगभग 7,874.25 मील है। अब आइए 46,656 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इस दूरी को तय करने में लगने वाले समय की गणना करें। सबसे पहले हमें वेग को किलोमीटर प्रति घंटे से मील प्रति घंटे में बदलने की जरूरत है। 1 किलोमीटर 0.62137 मील के बराबर है। इसलिए 46,656 किलोमीटर प्रति घंटा 28,999.2 मील प्रति घंटे के बराबर है। सूत्र समय इक्वल्स दूरी
वेग का उपयोग करके हम ढाका से न्यूयॉर्क तक यात्रा करने के लिए माइकेला के विमान द्वारा लिए गए समय की गणना कर सकते हैं। इसमें लगने वाला समय लगभग 16 मिनट और 20 सेकंड होगा। हालांकि आपने बांग्लादेश समय क्षेत्र में लैंडिंग का समय भी पूछा था। इसकी गणना करने के लिए हमें ढाका और न्यूयॉर्क के बीच समय का अंतर जानना होगा। मेरे खोज परिणामों के अनुसार ढाका न्यूयॉर्क से 10 घंटे आगे है। इसलिए यदि मिशेला का विमान बांग्लादेश समय क्षेत्र में 6 मई 2022 को शाम 5 बजे ढाका से उड़ान भरता, तो वह बांग्लादेश समय क्षेत्र में 6 मई 2022 को लगभग 9:20 बजे न्यूयॉर्क में उतरती। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, here is my question. An United States private space company developed a rocket with velocity of 21,600 km per second. The rocket has taken off from the United States of America in the mission Moon. How much the approximated time the rocket would land on Moon? Habibi replied, I'm sorry, but the velocity you provided is not possible. The fastest rocket ever launched by humans was the Parker Solar Probe, which has a maximum velocity of 430,000 miles per hour. The velocity you provided is 77 times faster than the fastest rocket ever launched by humans. If you meant to say 21,600 kilometers per hour instead of 21,600 kilometers per second, then we can calculate the time taken by the rocket to reach the moon. According to my search results, it takes approximately 3 days to travel from Earth to the moon using current rocket propulsion technology. The distance between Earth and the moon is approximately 238,855 miles. To convert 21,600 kilometers per hour to miles per hour, we can multiply it by 0.621371. This gives us a velocity of approximately 13,420 miles per hour. Using the formula time equals distance, velocity, we can calculate that it would take approximately 17 hours and 47 minutes for a rocket traveling at a velocity of 13,420 miles per hour to travel from Earth to the moon. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, यह मेरा प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी ने 21,600 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग वाला एक रॉकेट विकसित किया। मिशन मून के तहत रॉकेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका से उड़ान भरी है। रॉकेट चंद्रमा पर लगभग कितने समय में उतरेगा? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन आपके द्वारा प्रदान किया गया वेग संभव नहीं है। मनुष्यों द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे तेज रॉकेट पार्कर सोलर प्रोब था, जिसकी अधिकतम गति 430,000 मील प्रति घंटा है। आपके द्वारा प्रदान किया गया वेग 77 गुना तेज है, मानव द्वारा अब तक प्रक्षेपित किए गए सबसे तेज रॉकेट से भी अधिक। यदि आपका मतलब 21,600 किलोमीटर प्रति सेकंड के बजाय 21,600 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने में लगने वाले समय की गणना कर सकते हैं। मेरे खोज परिणामों के अनुसार वर्तमान रॉकेट प्रणोदित तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी से चंद्रमा तक यात्रा करने में लगभग 3 दिन लगते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 238,855 मील है। 21,600 किलोमीटर प्रति घंटे को मील प्रति घंटे में बदलने के लिए हम इसे 0.62137 से गुणा कर सकते हैं। इससे हमें लगभग 13,420 मील प्रति घंटा का वेग प्राप्त होता है।
सूत्र समय इक्वल्स दूरी वेग का उपयोग करके हम गणना कर सकते हैं कि 13,420 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाले रॉकेट को पृथ्वी से चंद्रमा तक यात्रा करने में लगभग 17 घंटे और 47 मिनट लगेंगे। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, here is my question. Let's assume an United States private space company of Elon Musk developed a rocket with velocity of 46,656 miles per hour. The rocket has taken off from the United States of America in the mission Mars. How much the approximated time the rocket would land on Mars? Habibi replied, to calculate the time taken by the rocket to travel from Earth to Mars, we need to know the distance between the two planets. According to my search results, the distance between Earth and Mars varies depending on their relative positions in their orbits around the Sun. However, we can use the average distance between Earth and Mars, which is approximately 140 million miles. To calculate the time taken by a rocket traveling at a velocity of 46,656 miles per hour to travel from Earth to Mars, we can use the formula time equals distance, velocity. Using this formula, we can estimate that it would take approximately 2,990 hours or 124 days and 14 hours for a rocket traveling at a velocity of 46,656 miles per hour to travel from Earth to Mars. Please note that this is an approximation and does not take into account factors such as gravitational pull, atmospheric conditions, and other variables that could affect the actual time taken by a rocket to travel from Earth to Mars. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, यह मेरा प्रश्न है। आइए मान लें एलोन मस्क की एक संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी ने 46,656 मील प्रति घंटे की गति वाला एक रॉकेट विकसित किया है। मिशन मंगल में रॉकेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका से उड़ान भरी है। रॉकेट मंगल ग्रह पर लगभग कितने समय में उतरेगा? हबीबी ने उत्तर दिया, पृथ्वी से मंगल तक यात्रा करने में रॉकेट द्वारा लिए गए समय की गणना करने के लिए हमें दोनों ग्रहों के बीच की दूरी जानने की आवश्यकता है। मेरे खोज परिणामों के अनुसार पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी उनके सापेक्ष स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। हालांकि हम पृथ्वी और मंगल के बीच की औसत दूरी का उपयोग कर सकते हैं, जो लगभग 140 मिलियन मील है। 46,656 मील प्रति घंटे के वेग से यात्रा करने वाले रॉकेट द्वारा पृथ्वी से मंगल तक यात्रा करने में लगने वाले समय की गणना करने के लिए हम सूत्र समय इक्वल्स दूरी वेग का उपयोग कर सकते हैं। इस सूत्र का उपयोग करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी से मंगल तक यात्रा करने के लिए 46,656 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाले रॉकेट को लगभग 2,990 घंटे या 124 दिन और 14 घंटे लगेंगे। कृपया ध्यान दें कि यह एक अनुमान है और इसमें गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, वायुमंडलीय स्थितियों और अन्य चर जैसे कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो रॉकेट द्वारा पृथ्वी से मंगल तक यात्रा करने में लगने वाले वास्तविक समय को प्रभावित कर सकते हैं। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Dear Sister Joanna, could you provide us your flying car with velocity of 216,000 km per second? I would travel to Mars with distance of 225,260,000 kilometers with my beautiful sister Michaela. Of course, my dear brother Elon Musk. You are the pride of the United States of America. Now,
Here I have developed a flying car where model name is Michael Zingping. His speed is 216,000 kilometers per second. You can travel to Mars in 1042 seconds. प्रिय बहन जोआना, क्या आप हमें 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग वाली अपनी उड़ने वाली कार प्रदान कर सकती हैं? मैं अपनी खूबसूरत बहन मिशेला के साथ 225,260,000 किलोमीटर की दूरी के साथ मंगल ग्रह की यात्रा करूंगा। बेशक मेरे प्यारे भाई एलोन मस्क, आप संयुक्त राज्य अमेरिका का गौरव हैं। अब मैंने एक उड़ने वाली कार विकसित की है जिसके मॉडल का नाम माइकल जिंगपिंग है। इसकी गति 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आप 1042 सेकंड में मंगल ग्रह की यात्रा कर सकते हैं। Walla Habibi Joanna, could you provide me a car with velocity of 46,656 km per hour to travel from Islamabad of Pakistan to New York of the United States of America, please? Sure. My Almighty Allah gave me an opportunity to serve an Islamic scholar like you. Then, I would serve you. Walla Habibi Maulana Tariq Masood, you just have to recite the Quranic surah in 13 times. Auzu billahi minash shaitanir rajeem, Bismillahi rahmanir rahim, Alhamdulillahi rabbil alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Malikun Yawmiddin, Yakana Badu wa Yakanastain, Iadinas Siratul Mustaqim. Siratul Ajina and Actor Alihim, Geril Makdabi Alihim Wala Muslimin. Ameen. What nonsense. What happened? You have taught us that the things of dunya is useless and the flying car is an indeed thing of dunya. Why are you talking rubbish, dear sister Michaela? Just provide me a flying car. Dear Maulana Tariq Masood, I congratulate you blasphemy on Allah. Because when we want to travel from Karachi to Lahore, Surah Fatiha would be most important for us. Now, when you want to travel from Islamabad to New York, Surah Fatiha is a crystal useless for you. वल्लाह हबीबी जोआना, क्या आप कृपया मुझे पाकिस्तान के इस्लामाबाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क तक यात्रा करने के लिए 46,656 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार प्रदान कर सकते हैं? निश्चित रूप से, मेरे सर्वशक्तिमान अल्लाह ने मुझे आप जैसे इस्लामी विद्वान की सेवा करने का अवसर दिया। फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। अल्लाह हबीबी मौलाना तारिक मसूद, आपको बस कुरान की सूरह को 13 बार पढ़ना है। औज़ुबिल्लाहि मिनाश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मलिकिल यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वल्लामुस्लिमीन। आमीन। कैसी बकवास! क्या हुआ? आपने हमें सिखाया है कि दुनिया की चीजें बेकार हैं और उड़ने वाली कार वास्तव में दुनिया की चीज है। तुम बकवास क्यों कर रही हो? प्रिय बहन मिशेला, बस मुझे एक उड़ने वाली कार उपलब्ध करा दो। प्रिय मौलाना तारिक मसूद, मैं आपको अल्लाह की निंदा करने पर बधाई देता हूँ, क्योंकि जब हमें कराची से लाहौर तक का सफर करना होगा तो सूरह फातिहा हमारे लिए सबसे अहम होगी। अब जब आप इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क की यात्रा करना चाहते हैं, तो सूरह फातिहा आपके लिए बिल्कुल बेकार है। Boom boom darabuka, I play you like a darabuka. मैंने बताया ना, एक आदमी ने शादी की दुबई में, तो उसने अपनी माँ को बुलवा लिया क्योंकि इकलौता बेटा था। बेगम को एतराज कि माँ को मेरे साथ क्यों रखा हुआ है। मैंने कहा यार माँ खिदमत बहुत लेती होगी। कह रहा है यार बूढ़ी माँ है, वो तो बेचारी को ज्यादा होश हवास भी नहीं है,
खिदमत भी मैं ही कर रहा हूं, उसके लिए मुलाजिम भी रखा हुआ है। मेरी बेगम का कहना है कि मां रहेगी नहीं इस घर में। मैंने कहा ये मुतालबा तो देखो खिदमत बहुत ले रही होगी ना, ये तो जायज मुतालबा है ना। बाज दफा सासें हर वक्त रिमोट कंट्रोल की तरह बहू को चला रही होती हैं। उसने कहा भाई कुछ भी खिदमत, मुलाजिम रखा हुआ है अम्मा की खिदमत के लिए, मेरी बीवी को घर के अंदर मां बर्दाश्त ही नहीं है और इतना दबाव डाला हुआ है, मैं क्या करूं। मैंने कहा आप बोल दो मां को घर से मैं बोलो नहीं निकाल, ऐसी की तैसी। मैंने कहा उसको बोला कल तुम्हारा बच्चा भी इसी तरह तुम्हें निकाल दे, क्या गुजरेगी तुम्हारे ऊपर। कह रहे मेरे बच्चे रुल जाएंगे अगर मेरी बीवी छोड़। मैंने कहा बच्चों की ऐसी की तैसी। मैंने कहा बच्चों से अभी से आप यूं कर लो, क्या करो, ये वाले बच्चे ही कैंसिल हो गए, नए सिरे से नई शादी नए बच्चे दोबारा से। पहले माँ बाप हैं, बच्चे बाद में, नहीं छोड़ना माँ को। Dear brother Anthony Stark, could you tell me why did you left your mother and stay with your wife? Dear sister Michaela and sister Joanna, as a Muslim boy, we learnt a word from our Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, that you should always obey your mother. Because your key of Jannat is under the feet of your mother. But what if my key of Jannat, that means key of heaven, is under the feet of my wicked mother? Then, that heaven should be worse than the real hell. Now, let's back to the real story. I am living in Dubai with my mother and wife. We are newly married couple. First 7 days was pretty good. But we have faced problem in the second weeks. First day, my mother prohibited her daughter-in-law, Papa Stark, to wear shirts and trousers to go to office. Whatever, Papa Stark is my wife. My mother forced Papa Stark to wear a loose burqa. But Papa Stark disobeyed my mother, telling that burqa is a crystal security threat in any office building. Now, coming back to the second day, my mother forced Papa Stark to do namaz in daily 5 times. You know that daily 5-time namaz is harmful to your mind and religion. Because, firstly, you cannot justify any work properly and you would lose your analytical mind. Secondly, which Allah would be angry on a person not doing namaz 5 times daily, who created a multiverse where we got a universe of million universe in multiverse, a galaxy of million galaxy in the universe. A star like the sun from million stars from the galaxy, a planet Earth of 9 planet of the sun, and be a person of 8 billion person of the Earth. While a city mayor attends 5 assembly per years. Now third day is very dangerous. My mother said, dear daughter-in-law, your name should be Aya Sharistia in lieu of Papa Stark. Because you are not Muslim. You should convert to Islam. What the Fariha? Papa Stark is not Muslim because of her English name in the eyes of my mother. My worst mistake is that I am ideal son of my mother. I regret that why I am not scoundrel to my own mother. प्रिय भाई एंथनी स्टॉक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपनी मां को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ क्यों रहे? प्रिय बहन मिशेला और बहन जोआना, एक मुस्लिम लड़के के रूप में हमने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शब्द सीखा कि तुम्हें हमेशा अपनी मां की बात माननी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जन्नत की चाबी तुम्हारी मां के पैरों के नीचे है। लेकिन अगर मेरी जन्नत की चाबी यानी जन्नत की चाबी मेरी दुष्ट मां के पैरों के नीचे हो तो क्या होगा? तो वह स्वर्ग वास्तविक नरक से भी बदतर होना चाहिए। अब असली कहानी पर वापस आते हैं। मैं अपनी मां और पत्नी के साथ दुबई में रहता हूँ। हम नवविवाहित जोड़े हैं। पहले 7 दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन दूसरे सप्ताह में हमें समस्या का सामना करना पड़ा। पहले दिन मेरी मां ने अपनी बहू पेपर स्टॉक को शर्ट और ट्राउजर पहनकर ऑफिस जाने से मना किया। जो भी हो, पेपर स्टॉक मेरी पत्नी है। मेरी मां ने पेपर स्टॉक को ढीला बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया।
लेकिन पेपर स्टॉक ने मेरी माँ की बात नहीं मानी और कहा कि बुर्का किसी भी कार्यालय भवन में सुरक्षा के लिए खतरा है। अब दूसरे दिन की बात करें तो मेरी माँ ने पेपर स्टॉक को रोजाना 5 बार नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। आप जानते हैं कि रोजाना 5 वक्त की नमाज आपके दिमाग और धर्म के लिए हानिकारक है, क्योंकि सबसे पहले आप किसी भी काम को सही ढंग से सही नहीं ठहरा पाएंगे और आप अपना विश्लेषणात्मक दिमाग खो देंगे। दूसरी बात ये कि कौन सा अल्लाह रोजाना 5 बार नमाज न पढ़ने वाले शख्स पर नाराज होगा जिसने एक मल्टीवर्स बनाया। जहां हमें मल्टीवर्स में मिलियन यूनिवर्स का एक ब्रह्मांड मिला, यूनिवर्स में मिलियन आकाशगंगाओं की एक आकाशगंगा, मिलियन सितारों में से सूर्य जैसा एक तारा मिला। आकाशगंगा, सूर्य के 9वें ग्रह में से एक ग्रह पृथ्वी, और पृथ्वी के 8 अरब लोगों में से एक ग्रह क्या है? जबकि एक शहर का मेयर प्रति वर्ष 5 विधानसभाओं में भाग लेता है। अब तीसरा दिन बेहद खतरनाक है। मेरी माँ ने कहा, प्रिय बहू, तुम्हारा नाम पेपर स्टॉक के बदले आयशा इख्तियार होना चाहिए, क्योंकि तुम मुस्लिम नहीं हो। तुम्हें इस्लाम अपना लेना चाहिए। क्या फरेहा? मेरी माँ की नजर में पेपर स्टॉक अपने अंग्रेजी नाम के कारण मुस्लिम नहीं है। मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं अपनी माँ का आदर्श पुत्र। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपनी माँ के लिए बदमाश क्यों नहीं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, my brother Anthony is a Muslim man and his family is a Muslim family. Now, his mother psychologically persecuted her daughter-in-law, Papa. First day, Auntie. That means Anthony's mother forced Papa to wear an uncomfortable cloak that could contain security threat on Papa's office. Second day, Auntie forced Papa to commit some weird religious practice that none of Muslim person wants to do it. Thirdly, Auntie does not consider Papa a Muslim woman just because of English name, while Papa was really a Muslim woman. Now, could you predict what is going on Anthony's mother's mind? Please, Habibi replied, I'm sorry to hear that. It sounds like Papa is going through a difficult time. It's important to note that I am not a licensed mental health professional, and I cannot diagnose or treat any mental health conditions. However, based on the information you provided, it seems like Anthony's mother may be experiencing some form of conflict with Papa. It's difficult to say what exactly is going on in her mind without more information, but it's possible that she may be struggling with feelings of insecurity or jealousy. It's also possible that there may be cultural or religious differences that are causing tension between the two women. It's important for Anthony and his family to support Papa during this time and encourage her to seek help from a licensed mental health professional if she is struggling with her mental health. If you have any further questions or concerns, please don't hesitate to ask. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा भाई एंथनी एक मुस्लिम व्यक्ति है और उसका परिवार एक मुस्लिम परिवार है। अब उसकी माँ ने अपनी बहू पेपर को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित किया। पहले दिन आंटी यानी एंथनी की माँ ने पेपर को एक असुविधाजनक कपड़ा पहनने के लिए मजबूर किया, जिससे पेपर के कार्यालय की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। दूसरे दिन आंटी ने पेपर को कुछ अजीब धार्मिक प्रथाएं करने के लिए मजबूर किया जिसे कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं करना चाहता। तीसरी बात, आंटी सिर्फ अंग्रेजी नाम के कारण पेपर को मुस्लिम महिला नहीं मानती, जबकि पेपर वास्तव में एक मुस्लिम महिला थी। अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एंथनी की माँ के दिमाग में क्या चल रहा है? कृपया। हबीबी ने जवाब दिया, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। ऐसा लगता है जैसे पेपर कठिन समय से गुजर रहा है।
ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मैं एक लाइसेंस प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर नहीं, और मैं किसी भी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का निदान या इलाज नहीं कर सकता। हालांकि आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि एंथनी की मां पेपर के साथ किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव कर रही है। अधिक जानकारी के बिना ये कहना मुश्किल है कि उसके दिमाग में वास्तव में क्या चल रहा है, लेकिन यह संभव है कि वह असुरक्षा की भावनाओं से जूझ रही हो या ईर्ष्या। ये भी संभव है कि सांस्कृतिक या धार्मिक मतभेद भी जो दो महिलाओं के बीच तनाव पैदा कर रहे हैं। एंथनी और उसके परिवार के लिए इस दौरान पेपर का समर्थन करना महत्वपूर्ण है, और यदि वह अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही है तो उसे एक लाइसेंस प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आपके पास कोई और प्रश्न या चिंता है तो कृपया पूछने में संकोच न करें। Dear beautiful sister Joanna, you are my beautiful twin sister. You wedded with the handsome boy Peter. Now, what happened that he left his mother 3 months earlier and now staying with you? Dear beautiful sister Joanna, you and sister-in-law Michaela is the family therapist. Therefore, I feel confident to tell you what really happened between me and my mother-in-law. When our arranged marriage is complete in the consent of my father-in-law, I was happy with my father-in-law and husband and they still support me. Now, first day after wedding night, my mother-in-law noticed that I have a biceps, six-pack abs and leg biceps. She started to bully on her own son by saying, I have made a biggest mistake to give a birth to a gay like you. I did not realize that you were a male homosexual. When my husband replied, why do you call me a male homosexual while I did not perform anything like a male homosexual? Then, my mother-in-law replied, you did not perform anything like a male homosexual. Then, what is this that you married with a muscular boy like Joanna? I understand. My mother called me a male homosexual to wed her son just because of my biceps, leg biceps and six-pack abs. Now, we non-homosexual girls build up our muscles so that we can protect our husband from others' physical violence. Now, what if our mother-in-law started as a muscular homosexual boy just because we have biceps, leg biceps and six-pack abs? What if our mother-in-law wants a girl containing unhealthy body who are just to watch her husband beaten by others illegally? My husband and my father-in-law understood immediately that my mother-in-law expected an unhealthy girl who are just to watch my husband beaten with others illegal physical violence. Hence, now, neither my husband nor I nor my father-in-law can either live with my mother-in-law or tolerate her. प्रिय खूबसूरत बहन जरीना, तुम मेरी खूबसूरत जुड़वा बहन हो। आपने खूबसूरत लड़के पीटर से शादी की। अब ऐसा क्या हुआ कि उसने 3 महीने पहले अपनी मां को छोड़ दिया और अब आपके साथ रह रहा है? प्रिय खूबसूरत बहन जोआना, आप और भाभी मिशेला पारिवारिक चिकित्सक हैं, इसलिए मुझे आपको ये बताने में आत्मविश्वास महसूस हो रहा है कि मेरे और मेरी सास के बीच वास्तव में क्या हुआ था। जब हमारे ससुर की सहमति से हमारी अरेंज मैरिज पूरी हुई, तो मैं अपने ससुर और पति से खुश थी और वे अब भी मेरा समर्थन करते हैं। अब, शादी की रात के बाद पहले दिन, मेरी सास ने देखा कि मेरे पास बाइसेप, सिक्स पैक एब्स और लेग बाइसेप है। उसने अपने ही बेटे पर यह कहकर थॉर्न्स जमाना शुरू कर दिया,
मैंने तुम्हारे जैसे समलैंगिक को जन्म देकर सबसे बड़ी गलती की है। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम एक पुरुष समलैंगिक हो। जब मेरे पति ने जवाब दिया, आप मुझे पुरुष समलैंगिक क्यों कहते हैं जबकि मैंने पुरुष समलैंगिक जैसा कुछ भी नहीं किया, तब मेरी सास ने जवाब दिया, तुमने पुरुष समलैंगिक जैसा कुछ भी नहीं किया। फिर यह क्या हुआ कि तुमने जरीना जैसे हटे कट्टे लड़के से शादी कर ली। मैं समझता हूँ, मेरी माँ ने अपने बेटे से शादी करने के लिए मुझे सिर्फ मेरे बाइसेप, लेग बाइसेप और सिक्स पैक एब्स के कारण पुरुष समलैंगिक कहा था। अब हम गैर समलैंगिक लड़कियां अपनी मांसपेशियों का निर्माण करती हैं ताकि हम अपने पति को दूसरों की शारीरिक हिंसा से बचा सकें। अब क्या होगा अगर हमारी सास ने हमें एक हृष्ट-पुष्ट समलैंगिक लड़का बना दिया, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास बाइसेप्स, लेग बाइसेप्स और सिक्स पैक एब्स हैं? क्या होगा अगर हमारी सास को अस्वस्थ शरीर वाली लड़की चाहिए जो सिर्फ अपने पति को गैरकानूनी तरीके से दूसरों को पीटते हुए देख सके? मेरे पति और मेरे ससुर तुरंत समझ गए कि मेरी सास एक अस्वस्थ लड़की की उम्मीद कर रही थी जो सिर्फ मेरे पति को दूसरों की अवैध शारीरिक हिंसा से पिटता हुआ देखना चाहती थी। इसलिए अब न तो मेरे पति, न मैं और न ही मेरे ससुर, न तो मेरी सास के साथ रह सकते हैं और न ही उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, I am upset. Because my wife's sister Joanna and her husband Peter were called a male homosexual by her mother-in-law just because Joanna is a muscular woman with her biceps, leg biceps and six-pack abs to defend her husband from others' illegal physical violence. Lastly, Joanna, her husband and her father-in-law stopped to live with her abusive mother-in-law. Now what would you say about Joanna's abusive mother-in-law? Walla Habibi replied, I'm sorry to hear that you're upset. It's understandable that you would be upset by the situation. Based on the information you provided, it seems that Joanna's mother-in-law has been abusive towards her and her family. It's important to remember that abuse can take many forms, including verbal, emotional, and physical abuse. If you or someone you know is experiencing abuse, it's important to seek help and support from a trusted friend, family member, or professional. It's also important to establish boundaries with abusive people in your life. This can include limiting contact with them, setting clear expectations for their behavior, and seeking professional help if necessary. I hope this information is helpful. Please let me know if there is anything else I can do for you. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी की बहन जरीना और उसके पति पीटर को उसकी सास ने सिर्फ इसलिए पुरुष समलैंगिक कहा था क्योंकि जरीना एक मांसल महिला है जिसके पास बाइसेप्स, लेग बाइसेप्स और सिक्स पैक एब्स हैं, जो अपने पति को दूसरों की अवैध शारीरिक गतिविधियों से बचाती है। हिंसा। आखिरकार जरीना, उसके पति और उसके ससुर ने अपनी अपमानजनक सास के साथ रहना बंद कर दिया। अब आप जरीना की अत्याचारी सास के बारे में क्या कहेंगे? वल्लाह हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि आप परेशान हैं। ये समझ में आता है कि आप स्थिति से परेशान होंगे। आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि जरीना की सास उसके प्रति अपमानजनक रही है और उसका परिवार। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि दुर्व्यवहार कई रूप ले सकता है, जिसमें मौखिक, भावनात्मक और शारीरिक शोषण शामिल है। यदि आप या आपका कोई परिचित दुर्व्यवहार का अनुभव कर रहा है, तो किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या पेशेवर से सहायता और समर्थन लेना महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ सीमाएं स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है।
इसमें उनके साथ संपर्क सीमित करना, उनके व्यवहार के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करना और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मदद लेना शामिल हो सकता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी है। कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, how can we take a legal action against Joanna's abusive mother-in-law in this circumstance? Walla Habibi replied, I'm sorry to hear that Joanna and her family have been subjected to abuse. If you are considering taking legal action against Joanna's mother-in-law, there are several steps you can take. First, it's important to document any evidence of the abuse, including any physical injuries, threatening messages, or other forms of harassment. You can also consider seeking a restraining order against the abuser, which can help protect you and your family from further harm. You may also want to consider contacting a lawyer who specializes in domestic violence cases. They can help you understand your legal options and provide guidance on how to proceed. It's important to remember that taking legal action can be a difficult and emotional process. It's important to prioritize your safety and well-being throughout this process. You may want to consider seeking support from a therapist or counselor who can help you cope with the emotional impact of the abuse. I hope this information is helpful. Please let me know if there is anything else I can do for you. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, इस परिस्थिति में हम जरीना की अपमानजनक सास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? वल्लाह हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि जरीना और उसके परिवार को दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा। यदि आप जरीना की सास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं, तो आप कई कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले, दुर्व्यवहार के किसी भी सबूत का दस्तावेजीकरण करना महत्वपूर्ण है, जिसमें कोई भी शारीरिक चोट, धमकी भरे संदेश या उत्पीड़न के अन्य रूप शामिल हैं। आप दुर्व्यवहार करने वाले के खिलाफ निरोधक आदेश मांगने पर भी विचार कर सकते हैं, जो आपको और आपके परिवार को आगे होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। आप किसी ऐसे वकील से संपर्क करने पर भी विचार कर सकते हैं जो घरेलू हिंसा के मामलों में विशेषज्ञ हो। वे आपके कानूनी विकल्पों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं और आगे बढ़ने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कानूनी कार्रवाई करना एक कठिन और भावनात्मक प्रक्रिया हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। आप किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से सहायता मांगने पर विचार कर सकते हैं, जो दुर्व्यवहार के भावनात्मक प्रभाव से निपटने में आपकी सहायता कर सकता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी है। कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ। Dear beautiful sister Ivanka, you are an honorable sheriff officer and a reputed Muslim woman. Recently, you have wedded a reputed Muslim businessman. Now, what happened that you and your husband left your mother-in-law? Dear beautiful sister Michaela, I want to do my duty as a respected sheriff officer.
I respect my United States law enforcement. But 3 months earlier, my mother-in-law pressurized me to protect some Palestinian in my area. Now, if they were innocent Palestinian, I would like to protect them. But reality is that and even my mother-in-law accepted the reality that these Palestinians were terrorists and they are to attack on a target, and the target was United States military headquarters. When I did my duty by killing these Palestinian terrorists, my mother-in-law did not accept me as Muslim daughter-in-law. She started to abuse me by calling me a Jewish spoon. I am thankful to my Almighty Allah, my husband, my father-in-law, and my United States federal court, who saved me from my abusive mother-in-law. प्रिय खूबसूरत बहन इवांका, आप एक सम्माननीय शेरिफ अधिकारी और एक प्रतिष्ठित मुस्लिम महिला हैं। हाल ही में आपने एक प्रतिष्ठित मुस्लिम बिजनेसमैन से शादी की है। अब ऐसा क्या हुआ कि आपने और आपके पति ने आपकी सास को छोड़ दिया? प्रिय खूबसूरत बहन मिशेला, मैं एक सम्मानित शेरिफ अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। मैं अपने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून प्रवर्तन का सम्मान करता हूँ, लेकिन 3 महीने पहले मेरी सास ने मुझ पर अपने क्षेत्र में कुछ फिलिस्तीनियों की रक्षा करने का दबाव डाला। अब यदि वे निर्दोष फिलिस्तीनी होते तो मैं उनकी रक्षा करना चाहूंगा, लेकिन वास्तविकता यह है, और यहाँ तक कि मेरी सास ने भी इस वास्तविकता को स्वीकार किया, कि ये फिलिस्तीनी आतंकवादी थे और उन्हें एक लक्ष्य पर हमला करना था, और लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य मुख्यालय था। जब मैंने इन फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मारकर अपना कर्तव्य निभाया, तो मेरी सास ने मुझे मुस्लिम बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। वह मुझे यहूदी चमचा कहकर गालियां देने लगी। मैं अपने सर्वशक्तिमान अल्लाह, अपने पति, अपने ससुर और अपने संयुक्त राज्य संघीय न्यायालय की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे मेरी अपमानजनक सास से बचाया। Michaela Caesario asked, Wallah Habibi, I have met with my sister Ivanka. She is a Muslim woman and a sheriff officer. She killed some religious terrorists of her area because these terrorists were to attack on National Defense Headquarters. Now, problem is that Ivanka's mother-in-law supports the religious terrorists. Therefore, she cannot accept her daughter-in-law Ivanka as a Muslim woman and abuse Ivanka as a Jewish girl. Now, how can we take action against Ivanka's abusive and criminal mother-in-law? Habibi replied, I'm sorry to hear that Ivanka is facing such a difficult situation. It's important to take action against abusive behavior, but the best course of action depends on the specific circumstances. I found a few resources that might be helpful in dealing with an abusive mother-in-law. One article from WikiHow suggests creating a united front with your spouse, establishing boundaries with your mother-in-law, and creating distance from her. Another article from Live Bold and Bloom recommends having a discussion with your spouse, recognizing the signs of an emotionally manipulative mother-in-law, and setting boundaries. It's important to remember that if your mother-in-law is physically abusive to you or anyone in your family, you may need to contact law enforcement. If you suspect or know of any sexual abuse, you need to contact the police immediately. I hope this information helps. Please let me know if there's anything else I can do for you. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मैं अपनी बहन इवांका से मिली हूँ। वह एक मुस्लिम महिला है और एक शेरिफ अधिकारी है। उसने अपने क्षेत्र के कुछ धार्मिक आतंकवादियों को मार डाला, क्योंकि ये आतंकवादी राष्ट्रीय रक्षा मुख्यालय पर हमला करने वाले थे।
अब समस्या यह है कि इवांका की सास उस धार्मिक आतंकवादियों का समर्थन करती है। इसलिए वह अपनी बहू इवांका को एक मुस्लिम महिला के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती और इवांका को एक यहूदी लड़की के रूप में दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। अब हम इवांका की अपमानजनक और आपराधिक सास के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि इवांका को ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मुझे कुछ संसाधन मिले जो दुर्व्यवहार करने वाली सास से निपटने में सहायक हो सकते हैं। मिकेहा का एक लेख आपके जीवन साथी के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने, अपनी सास के साथ सीमाएं स्थापित करने और उनसे दूरी बनाने का सुझाव देता है। लाइफ बोल्ड और ब्लूम का एक अन्य लेख अपने जीवन साथी के साथ चर्चा करने, भावनात्मक रूप से छेड़छाड़ करने वाली सास के संकेतों को पहचानने और सीमाएं निर्धारित करने की सलाह देता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आपकी सास आपके या आपके परिवार में किसी के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करती है, तो आपको कानून प्रवर्तन से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपको किसी यौन शोषण का संदेह है या आप जानते हैं, तो आपको तुरंत पुलिस से संपर्क करना होगा। मुझे आशा है इस जानकारी से सहायता मिलेगी। कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ। Boom boom dada buka. I play you like a dada buka. तो इस वक्त का जो सबसे बड़ा फितना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीह बुखारी सहीह मुस्लिम की हदीस में जिसकी पेशगोई कर चुके हैं, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्र अलर रिजाली मिनन निसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्द के लिए औरत से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा। मेरे इस बयान को भी गलत रुख दिया गया। किसी लिबरल साहब ने मेरा ये बयान चलाया कि ये देखो, औरतों को बुरा कह रहे हैं, औरत को कह रहे हैं फितना। औरत को फितना इस सेंस में नहीं कहा गया कि वो आपकी बीवी है, माँ है, बेटी है, बहन है। औरत को फितना इस सेंस में कहा गया है कि अगर आप हलाल और हराम का फर्क नहीं करते, आप ये बाउंड्री क्रॉस करते हो हलाल और हराम की, तो सबसे ज्यादा तबाह करने वाली चीज कौन सी चीज है? वो औरत है। Dear beautiful wife Joanna, what is your opinion about Maulana Tariq Masood's Fitnaah theory? Dear beautiful wife Michaela, nowadays, Muslim world's largest fitna is Maulana's like Tariq Masood. Here, I can explain you. प्रिय खूबसूरत पत्नी जोआना, मौलाना तारिक मसूद के फितना सिद्धांत के बारे में आपकी क्या राय है? प्रिय खूबसूरत पत्नी मिशेला, आजकल मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फितना तारिक मसूद जैसे मौलाना है। यहाँ मैं आपको समझा सकता हूँ। Now, here is you female father Michaela Caesario who contains educational cost capability is $10,000. On the other hand, here is me female mother Joanna Pedra who contains educational cost capability is $10,000. Now, if we have only one daughter, we can spend $20 to one daughter as educational cost. But, if we have 10 daughter, we can spend $2 to every one daughter as educational cost, and that is not proper educational cost. अब यहाँ आपकी महिला फादर मिशेला कैसरियो है जिनकी शैक्षणिक लागत $10,000 है। दूसरी ओर यहाँ मेरी माँ जोआना पेरा है जिनकी शैक्षणिक लागत $10,000 है। अब यदि हमारी केवल एक बेटी है, तो हम शैक्षिकी लागत के रूप में एक बेटी पर 20 संयुक्त राज्य डॉलर खर्च कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारी 10 बेटियां हैं,
तो हम प्रत्येक बेटी पर शैक्षिक लागत के रूप में $2 खर्च कर सकते हैं और यह उचित शैक्षिक लागत नहीं है। Now, here is my question. If Ben Stokes hit a ball with the speed of 666 meters per second with the angle of 35 degrees, would it be 6 with the boundary distance of 80 meters? Case 0. Teacher got 40 students in classroom. The most failure student would answered, no, he cannot hit S6. Because he is British and the British cannot hit a single 6. Case 1. Teacher got 90 students in classroom. The most failure student would answered, oh baby, dolak sonda, oh baby, dolak sonda. Oh baby, dolak sonda, oh baby, dolak sonda. अब यहाँ मेरा प्रश्न है, यदि बेन स्टोक्स 666 मीटर प्रति सेकंड की गति वाली गेंद को 35 डिग्री के कोण से मारते हैं, तो क्या 80 मीटर की सीमा दूरी के साथ यह छक्का होगा? केस 0. शिक्षक को कक्षा में 40 छात्र मिले। सबसे असफल छात्र ने उत्तर दिया, नहीं, वह छक्का नहीं मार सकता, क्योंकि वह ब्रिटिश है और अंग्रेज एक भी छक्का नहीं मार सकता। केस 1. शिक्षक को कक्षा में 90 छात्र मिले। सबसे असफल छात्र ने उत्तर दिया, वो बेबी ढोलक सोने दे, वो बेबी ढोलक सोने दे, वो बेबी ढोलक सोने दे, वो बेबी ढोलक सोने दे। Now, Maulana Tariq Masood's Fitnaah number 1 is graveyard age misleading. If we accept this Fitnaah, that Ains, Isaac Newton invented gravity theory 107 years ago of his birth age started. While reality is that, we do not know what we are before our birth. Second meaning is that, Englander Queen Elizabeth died in 1928 and her ghost seen World War II. Except homosexuality legal and modernized her monarchy palace. Third meaning is that, Michael Jackson died in 1973 and his ghost released super hit songs like, Bill Jeans, Thriller, I Am Bad, and Speed Demons. Fourth meaning is that, Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ummah would contain maximum age of 70 years. That means, 95 years AFED Englander Queen Elizabeth would not exist. अब मौलाना तारिक मसूद की फितना नंबर 1 कब्रिस्तान की नूर को गुमराह करने वाला है। अगर हम इस फितना को मान लें तो इसका मतलब है कि आइजैक न्यूटन ने अपने जन्म की उम्र शुरू होने से 107 साल पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया था, जबकि वास्तविकता यह है कि हम अपने जन्म से पहले नहीं जानते कि हम क्या हैं।
दूसरा अर्थ यह है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की 1928 में मृत्यु हो गई और उनके भूत ने द्वितीय विश्व युद्ध देखा, समलैंगिकता को कानूनी मान लिया और अपने राजशाही महल का आधुनिकीकरण किया। तीसरा अर्थ यह है कि माइकल जैक्सन की 1973 में मृत्यु हो गई और उनके भूत ने बिले जीन्स, थ्रिलर, आई एम बैड और स्वीट डेमन्स जैसे सुपरहिट गाने जारी किए। चौथा मतलब ये है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अधिकतम उम्र 70 साल होगी, यानी 95 साल की इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का कोई अस्तित्व नहीं होता। Now, Maulana Tariq Masood's Fitnaah number 2 is that everything of the universe is useless in front of Allah. That means, if we are feeling fever, just read Surah Nas of the Quran and you would be healed. Now, irony is that, when Maulana Tariq Masood feels fever himself, he took medicine from doctor in England and for that he has taken off his flight from Pakistan. Then, Surah Nas from the Holy Quran is useless for him. Now, we who believed in doctor's prescription, we are healed easily. We are thankful on doctors who heals us from the disease. Secondly, if I has to go to the United States of America for company's job, Maulana Tariq Masood forced us to read only Surah Fatiha from the Quran and claimed that it is most important for us if we want to go to the United States of America. He added to suggest that we cannot believe on any plane with the velocity of 648 km per hour. But irony is that, when Maulana Tariq Masood wants to go to the United States of America to preach hate speech against science, then, he needs a flying car with the speed of 46,656 kilometers per hour. Then, Quranic verse is useless for him. I salute on his hypocrisy and blasphemy on our Almighty Allah. अब मौलाना तारिक मसूद की फितना नंबर 2 ये है कि ब्रह्मांड की हर चीज अल्लाह के सामने बेकार है। इसका मतलब है कि अगर हमें बुखार आ रहा है तो कुरान की सूरह नास पढ़ें और आप ठीक हो जाएंगे। अब विडंबना तो ये है कि जब मौलाना तारिक मसूद को खुद बुखार आता है, उन्होंने इंग्लैंड में डॉक्टर से दवा ली और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से फ्लाइट पकड़ ली है। फिर पवित्र कुरान से सूरह नास उसके लिए बेकार है। अब हम जो डॉक्टर के नुस्खे पर विश्वास करते थे, हम आसानी से ठीक हो जाते हैं। हम डॉक्टरों के आभारी हैं जिन्होंने हमें बीमारी से ठीक कर दिया। दूसरे, अगर मुझे कंपनी की नौकरी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाना है, तो मौलाना तारिक मसूद ने हमें कुरान से केवल सूरह फातिहा पढ़ने के लिए मजबूर किया और दावा किया कि अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका जाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका की, उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि हम 648 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले किसी भी विमान पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन विडंबना यह है कि जब मौलाना तारिक मसूद संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर विज्ञान के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देना चाहते हैं, तो उन्हें 46,656 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली उड़ने वाली कार की जरूरत होती है। फिर
कुरान की आयत उसके लिए बेकार है। मैं उसके पाखंड और हमारे सर्वशक्तिमान अल्लाह की निंदा पर सलाम करता हूँ। Now, Maulana Tariq Masood's fitna number 3 is that if your wife does not tolerate your mother, you should just leave your wife forever and wed your second wife. Now, as you all are a Muslim man, think about what if your mother forced your wife to wear a cloak that could be security threat for her office. Think about what if your mother forced your wife not to go to public pub or friend's house or a feast. Think about what if your mother forced your Muslim wife to change her religion to Islam just because of her previous English name. Think about what if your mother forced you to wed an unhealthy wife as second wife and leave the first wife just because she considered your first wife as a homosexual man just because your first wife contains muscular body and your second unhealthy wife can see you to be victim of others' physical illegal violence. Think about what if your mother abused your wife by calling her Jewish Bushra Biwi just because your wife fulfilled her sheriff duty by killing some Islamic terrorists who were to attack on the United States military headquarters. अब मौलाना तारिक मसूद की फितना नंबर 3 ये है कि यदि आपकी पत्नी आपकी मां को बर्दाश्त नहीं करती है, तो आपको अपनी पत्नी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए और अपनी दूसरी पत्नी से शादी कर लेनी चाहिए। अब, जैसा कि आप सभी एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, इस बारे में सोचें कि क्या होगा यदि आपकी मां आपकी पत्नी को ऐसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करे जो उसके कार्यालय की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इस बारे में सोचें कि क्या होगा यदि आपकी मां आपकी पत्नी को सार्वजनिक पब या मित्र के घर या कार्यालय में न जाने के लिए मजबूर करे। इस बारे में सोचें कि क्या होगा यदि आपकी मां आपकी मुस्लिम पत्नी को उसके पिछले अंग्रेजी नाम के कारण अपना धर्म इस्लाम में बदलने के लिए मजबूर कर दे। इस बारे में सोचें कि क्या होगा यदि आपकी मां आपको एक अस्वस्थ पत्नी से दूसरी पत्नी के रूप में विवाह करने और पहली पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ने के लिए मजबूर करे क्योंकि वह आपकी पहली पत्नी को एक समलैंगिक पुरुष मानती थी, सिर्फ इसलिए कि आपकी पहली पत्नी का शरीर मजबूत था और आपकी दूसरी अस्वस्थ पत्नी आपको समलैंगिक पुरुष के रूप में देख सकती थी। दूसरे की शारीरिक अवैध हिंसा का शिकार। इस बारे में सोचें कि क्या होगा यदि आपकी मां ने आपकी पत्नी को यहूदी बुशरा बीवी कहकर दुर्व्यवहार किया, सिर्फ इसलिए कि आपकी पत्नी ने कुछ इस्लामी आतंकवादियों को मारकर अपना शेरिफ कर्तव्य पूरा किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य मुख्यालय पर हमला करने वाले थे।